नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज मध्य प्रदेशांतल्या ओमकारेश्वर हांगा आंतरराष्ट्रीय सिकल सेल दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीक हजर आशिल्ली. ह्या कार्यक्रमात उलयतना राष्ट्रपतींनी नमूद केलें की 2023त सुरू केल्ल्या राष्ट्रीय मोहिमेचें उद्दिश्ट ह्या राज्यान नियोजीत वेळे पयलींच साध्य केलां. ह्या महत्वपूर्ण कामगिरी बद्दल तांणी राज्य सरकाराचें कौतुक केलें. भलायकी सेवा बळकट करपा बाबतची सरकाराची कटिबद्धता आनी उत्तम भलायकी परिणामा खातीर वेळेर केल्ली उपाय येवजण हातूंत ही कामगिरी दिसून येता अशें तांणी म्हळें. एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है. देशांतल्या प्रत्येक नागरिकाक संविधानान दिल्ले अधिकार मेळोवन दिवपाक फौजदारी न्याय प्रणालीक एक योग्य साधन करपाची वेळ आयल्या अशें नवी दिल्लीत आयोजीत 26व्या अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट परिशदेत उलयतना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. तांणी म्हळें की देशाची ही प्रणाली सध्या परिवर्तनाच्या टप्प्यांतल्यान वता आनी समकालीन गरजो पुराय करपाक अद्ययावत केल्या. 2019 से हमने एक अभियान शुरू किया था, आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों में आमूलचूर परिवर्तन, उसको समय अनुकूल बनाना, आधुनिक विज्ञान और तकनीक को इसका एक महत्वपूर्ण अंग बनाना और एफआईआर को लॉजिकल एंड तक, अपराधी को सजा कराने तक 3 साल तक पहुंचाना. मुझे आनंद है कि हम 7 साल की यात्रा में एक काम को पूरा कर पाए. नॅशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टम म्हळ्यार NAFIS बद्दल उलयतना शाह हांणी म्हळें की अशीं खुबशीं प्रकरणां आसात जंय अत्यंत गुंतागुंतीचीं प्रकरणां सोडोवपाक ह्या प्रणालीची व्हड मजत जाल्या. तांणी नमूद केलें की NAFISची सद्याक फक्त 100% क्षमतेन वापर करतात आनी गुन्यांवकारांचो सोद घेवपा पयलींच हाचो वापर वाडोवपाक जाय अशें मत तांणी व्यक्त केलें. गुन्यांवाच्या प्रत्येक सुवाता वेल्यान एकठांय केल्ल्या ठशांच्या म्हळ्यार फिंगरप्रिंट्साच्या आदारान डेटाबेस समृद्ध करपाचेरूय NAFISचे यश पुरायपणान अवलंबून आसा हाचेर गृहमंत्र्यांनी भर दिलो. लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो, वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए. वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है. क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी फ्रांस आनी स्लोवाकिया ह्या 2 देशांचो आपलो यशस्वी दौरो पुराय केला. फ्रांसाच्या दौऱ्या वेळार तांणी एव्हियनात आयोजीत G7 शिखर परिशदेत सहभाग घेतलो. तशेंच ह्या परिशदेच्या निमतान तांणी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटनाचे प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आनी संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायद अल नाह्यान हांच्या सयत हेर फुडाऱ्यांकडेन द्विपक्षीय चर्चा केली. ताचे आदीं फ्रांसांतल्या निस शारांत ते आनी फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांणी संयुक्तपणान भारत इनोव्हेटिव्ह्स ह्या कार्यक्रमाचें उक्तावण केलें. तर स्लोवाकियाच्या दौऱ्या वेळार मोदींनी ब्रातिस्लावा हांगा स्लोवाक प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष पीटर पेलेग्रिनीची भेट घेतली. एका विशेष समारंभात स्लोवाक राजाध्यक्षांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक स्लोवाकियाचो सर्वोच्च राजसन्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हायट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास प्रदान केलो. केंद्रीय रान आनी पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी सांगलां की केंद्र सरकार गुजरातात बिबट्यांच्या अधिवासाच्या मुद्द्याचेर विचार करता. ह्या संदर्भात स्थापीत कार्यपद्दती आनी नियमा प्रमाण निर्णय घेतले अशें तांणी सांगलें. गांधीनगरात पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी सांगलें की केंद्रीय रान विभाग परिस्थितीचेर बारकायेन लक्ष दवरून आसा. भगलपुरात बिहार क्रिकेट असोसिएशनान आयोजीत केल्ल्या बायलांच्या अंडर-19 वन डे ट्रॉफी सर्तीत 19 वर्सां पिरायेची फलंदाज अक्षरा गुप्तान फक्त 126 बॉलांनी नाबाद 306 धांवड्यो केल्यो. भारतीय हवामान विभागान फाल्यां मेरेन ओडिशा, कोकण, गोवा, दर्यादेग, आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा ह्या भागात उष्ण आनी दमट हवामान उरूं येता. तशेंच ह्या म्हयन्याचे 23 तारखे मेरेन दर्यांत खोल वच्चें न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.